All right. So friends, in the previous lecture we discussed about the fundamental rights. Yes. And we discussed about the concept of fundamental rights. What are fundamental rights? How do they differ from other rights, what we call as legal rights? Okay, and there is a distinction between fundamental rights and constitutional rights as well, right? So आपने अभी नोट कर लेना है कि so far as बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी का रिपीट हो सकता है कि राइट टू वोट किस टाइप का राइट है, इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इज इट मियरली ए लीगल राइट? तो आप आंसर करोगे इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज लीगल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सब्सटेंटिव होता है. ठीक है. सिमिलरली राइट टू प्रॉपर्टी, इज इट प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, इज इट लीगल राइट और अंडर आर्टिकल 300A और इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो आंसर होगा इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है. तो वी डिस्कस्ड यस एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स सो फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न. उनका जेनेसिस क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? तो हम लोग का कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स ओनली. ठीक है. बिकॉज ब्रॉडली वी डिस्कस अबाउट द types of different rights and we discussed that rights can be what, legal rights, they can be moral rights. Okay, moral rights need not to be codified. Okay? They exist as moral claims, moral assertion की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं और फंडामेंटल राइट उन्हीं कैटेगरी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. दे आर इन फैक्ट वर्चुअली स्पीकिंग दे आर एक्चुअली मॉरल राइट्स. ठीक है. दे नीड नॉट बी कोडिफाइड बट राइट एन अटेम्प्ट वाज मेड इन 1948 टू कोडिफाई देम. और सबसे पहली बार जब आपने देखा कौन सी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की टीटी साइन हुई, दैट वाज द बिगेस्ट व्हाट यू कॉल एज इंस्पिरेशन. ठीक है. फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू प्रोवाइड फॉर एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. टुडे इन फंडामेंटल राइट, इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स तो है ही हैं, बट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम वी डू हैव certain commissions which exist today at the national level in the form of NHRC, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, राइट? और स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैं. देयर आर सम ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स आल्सो which exist in our country. Is that clear? Yes. Okay, so we discussed almost the concept of fundamental rights. What are rights? What is the distinction between fundamental rights and legal rights, right? And what is the inspiration behind the incorporation of these rights in our constitution? We discuss everything. We were discussing in the previous lecture about the salient features of fundamental rights that are laid down in part 3 of the constitution. Salient features क्या है? तो among the several salient features, कुछ salient features can be easily identified, उनको हम identify कर सकते हैं, right? एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि हमारे पार्ट 3 में, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, हमारे पार्ट 3 में ये जो राइट्स लिखे हैं, कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है, और कुछ राइट्स सबको मिलते हैं. ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 में ऐसा नहीं है कि सभी राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए हैं. देयर आर सम राइट्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन एज वेल. फॉरेनर्स भी उनको क्लेम कर सकते हैं, सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14. ठीक है. राइट टू रिलीजन, राइट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, एग्जैक्टली, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. ये राइट्स सबको मिलते हैं. ठीक है. राइट. दीज आर रिगार्डेड एज व्हाट, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. But there are some rights which are available only and exclusively to citizens, जिनको हम जनरली सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स कहते हैं. ठीक है. दैट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड सम सिविल लिबर्टीज